Hello students, so today we will learn the fifth grammar lesson, that is determiners. What is meant by determiners? So we will see these lines. A determiner is a word that comes before a noun and shows its limit. Okay, it is an adjective also. Some determiners are as follows. It means, what is meant by determiners? My dear students, determiners means those word which comes before a noun. जो भी हमारे सेंटेंस में नाउन होते हैं, उस नाउन से पहले आने वाले जो लेटर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिटरमाइनर. अब ये डिटरमाइनर्स क्या वर्क करता है, क्या काम करता है? इट शोज इट्स लिमिट. विच लिमिट? इट्स नाउन्स लिमिट. ओके, तो ये डिटरमाइनर के जो वर्ड्स आते हैं नाउन से पहले, तो वह वर्ड नाउन्स का लिमिट शो ऑफ करते हैं. जो भी सेंटेंस में प्रोसेस है या फिर जो भी नाउन है, उनके लिमिट्स को शो ऑफ करने का काम ये डिटरमाइनर्स करते हैं. ओके, और इन्हीं डिटरमाइनर्स को हम एडजेक्टिव भी बोलते हैं, तो ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं. सो सम ऑफ द एग्जांपल्स दैट इज डिटरमाइनर्स, दैट इज ए, एंड, द, ऑल, टू, बोथ, दिस, दैट, माई, योर, सम, एनी, ईच, एवरी, लिटल, फ्यू, मेनी, मच, a lot of. These are the examples of determiners. So you should remember that these determiners comes before a noun and it shows always its limit. Okay, noun's limit. So you have learned many of these determiners already. इसमें से हमने बहुत सारे determiners पहले ही लर्न कर चुके हैं. So here we shall study a few more. यहाँ पे हम कुछ और ऐसे determiners हैं जो हमने आज तक सीखे नहीं हैं, तो वो आज लर्न करेंगे. So let us see the here. Some and any. These are the two determiners which we will learn just now. Some is normally used in affirmative sentences and any is used in negative sentences and questions also. It means some ये जो वर्ड है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं, और एनी ये जो डिटरमाइनर है उसका नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन आस्क करने के टाइम उस एनी वर्ड का, एनी डिटरमाइनर का यूज़ किया जाता है. सो लेट अस सी द एग्जांपल. देयर आर सम बर्ड्स इन द ट्री. There are some birds in the tree. This is a affirmative sentence and here we can see the some determiner to show birds limit. Okay, तो यहाँ पे ये जो birds noun है उस noun से पहले ये word आया है और इस birds का limit show off करने का काम यह word करते हैं determiners. Okay, some birds. How many birds? Some birds. This is the limit. Then second, there aren't any birds in the tree. क्या वहाँ पे एक भी birds tree पे नहीं है? इस तरह से इट मीन्स दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस एंड वी यूज्ड एनी फॉर द नेगेटिव सेंटेंस आल्सो एज वेल एज क्वेश्चंस. सो एनी दिस डिटरमाइंस कम्स बिफोर द बर्ड्स नाउन एंड इट शोज द लिमिट ऑफ दिस बर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल. आर देयर एनी बर्ड्स इन द ट्री. क्या उस ट्रीज पे कोई भी बर्ड्स नहीं है? In this way, this is the question, and in that question we use any determine before a nouns to show its limit. नेक्स्ट, नॉट एनी मीन्स नो. ओके, जब भी किसी सेंटेंस में नॉट एनी आता है तो उस नॉट एनी का मीनिंग होता है नो. आई हैवंट एनी मनी इन माई पॉकेट. मेरे पॉकेट में कुछ भी मनी नहीं है. इस तरह से आई हैवंट एनी मीन्स नॉट एनी. सो आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट, तो नॉट एनी की जगह पे हम नो का भी यूज़ कर सकते हैं. आई हैव नो मनी इन माई पॉकेट इन दिस वे. सो लेट अस सी द मोर डिटरमाइनर्स दैट आर मच, मेनी, अ लॉट ऑफ. So much is used with uncountable nouns, many is used with countable nouns and both are used in questions and negatives. ये दोनों भी क्वेश्चन में भी और negatives में यूज़ करते हैं. A lot of means particular group of people or things. We can use a lot of in affirmative sentence with countable as well as uncountable nouns. तो ये जो much, many, a lot of है वो questions में, negatives में, uncountable मतलब उस सारे इसमें यूज़ करते हैं. तो मच का स्पेशली यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, मेनी का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन से पहले, और ये दोनों भी क्वेश्चन में और नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ किए जाते हैं. सो लेट अस सी द एग्जांपल. हाउ मेनी ऑरेंजेस डू यू हैव. हाउ मेनी, मेनी दिस इज अ काउंटेबल नाउन. सो ऑरेंज, this noun we can count oranges in numbers, so it is called countable noun. And before the countable noun we used many word, many determiner. Then the next sentence, we don't have many oranges. We don't have many oranges. This is a negative sentence. It means in negative sentence also we can use many determiner. So let us see the next page, and here also you have given some of the words.
Let us see the third example. We had a lot of oranges. A lot of, it means here we use a lot of for affirmative sentence as well as a countable oranges noun. A lot of, not many. Okay, a lot of का meaning होता है not many, मतलब बहुत सारे नहीं, सिर्फ a lot of. Then how much cheese is there in the fridge? How much? We can't count cheese in number, so this is an uncountable noun, and before uncountable noun we use much determiner. Fifth example, there was a lot of cheese in the fridge. A lot of means not much. Also a few, a little, and enough. These determiners also we used in. A few is used for countables, a little with uncountables, and enough with countables एज वेल एज अनकाउंटेबल. तो अ फ्यू इसका यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन से पहले, अ लिटल इसका यूज़ किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले, और इनफ ये जो डिटरमाइनर है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन से पहले यूज़ करते हैं. सी द एग्जाम्पल, देयर आर इनफ एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. इनफ एग्स काउंटेबल नाउन बिफोर वी यूज़ इनफ. We don't have enough money to buy a car. Money, this is also countable, so we use enough. I have a few tomatoes and a little cheese. So a few, this is a countable nouns, and a little cheese, this is a uncountable nouns. So you have to remember enough, a few, a little, in this way. So let us solve its question and answer. Fill in the blanks with some and any. यहाँ पे some और any के साथ आपको ये questions fill up करने हैं. I have also solved these questions for yourself, and here you have to observe this all question and answer and solve it in your textbook also. Okay students, so hopes you understand. So you have to take care and we will read its answer. Fill in the blanks with some or any. First, she can't eat any more orange apples. There isn't any eggs in the tray. Third, she has some red roses in her garden. Fourth, I want some eggs. Have you any? He has not solved any questions yet. He asked me for some soap, but I hadn't any. Don't make any noise. I want to have some sleep. Many people say that money makes the mayor go. Then second sentence, put in no or any in this fill in the blanks. So first, he has no time to play. Second, he doesn't have any time to play. There is no milk in the pot. There isn't any milk in the pot. There were no children in the park. There weren't any children in the park. I didn't buy any book from this shop. I bought no book from this shop. In this way, you have to complete this question and answer. Now look at the next page and question number 3 here. Rewrite each sentence using not any. Use the short form of not. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, उसमें आपको नॉट एनी का यूज़ करके या फिर नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसका यूज़ करके ये सेंटेंस बनाने हैं. तो हियर यू हैव गिवन नो वर्ड्स एंड यू हैव टू यूज नॉट एनी बिटवीन दिस सेंटेंस. सो फर्स्ट, यू गेव मी नो मनी. यहाँ पे नो आया है तो नो की जगह हमें क्या यूज़ करना है? एनी. ओके, नॉट एनी का यूज़ करना है इस सेंटेंस में. सो वी यूज़ गिव दिस इज अ past form of a verb. So this is the past form, so we use here did plus not, it means didn't. So its answer, you didn't give me any money. In this way you have to solve this question and answer. So let us see the second question. He saw no one in the office. So we write here, he didn't see anyone in the office. इस तरह से आपको क्या करना है, जो वर्ब है उसका वर्ब का फॉर्म देखो कौन सा है, और उसमें उस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करो और नो की जगह पे एनी का यूज़ करो. इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट यू हैव डन एंड सेकंड ऑल्सो आई हैव गिवन फॉर यू एंड यू हैव टू ऑब्जर्व दिस एंड सॉल्व रिमेनिंग ऑल क्वेश्चंस. सो लेट अस सी द फोर्थ क्वेश्चन हियर. Write a sentence using each of the following determiners. So you have given here some of the determiners and you have to make its new sentence by using these determiners. No, any, I have no money, I have some chocolates, then I have a little water. In this way we can use these all determiners by
क्रिएटिंग अवर न्यू सेंटेंसेस। तो यहाँ पे जो डिटरमाइनर्स आपको दिए हैं उससे आपको आपके मन से कुछ सेंटेंस रेडी करने हैं और वो राइट डाउन करने हैं। सो यू हैव टू राइट दिस ऑल क्वेश्चन एंड आंसर इट इन योर नोटबुक। सो लेट अस सी द 5th नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल डिटरमाइनर सम और एनी। तो यहाँ पे भी आपको कुछ सम और एनी के जो फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। नाउ लेट अस वी विल सॉल्व इट। फर्स्ट, दिस बकेट इज यूजलेस, it hasn't any handle. Won't you lend me some more money? I am hungry. Will you give me some cake? He gave you some money, didn't he? I must have this book at any rate. I can't find any good book here. If it is of some use, I will buy it. I shall be away for some time. They haven't any children. Please buy me some stamps. Any man can do it if he tries. We haven't any sugar in the house. I have read that story in some books. Then I see some beautiful birds in that tree. If there is any danger, blow the whistle. He is living at some place in East Africa. I doubt whether he has any spare money. The railway station is at some distance from the village. In this way, you have to complete this any or some determiners by using these sentences. Okay students, now students, here on the page number 23 you have given some of the more determiners. So let us we will learn about that. Few and little. Few is an adjective of number and little is an adjective of quantity. So few ये जो determiner है वो adjective है, but वह adjective का determiner हम number के साथ यूज़ करते हैं and little ये quantity के साथ यूज़ करते हैं. इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव है तो लिटल यूज़ करना है, नंबर ऑफ एडजेक्टिव है तो फ्यू यूज़ करना है. सो डिफरेंस इन द मीनिंग एंड यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू. A few and the few. Here are the difference between few, a few and the few. So let us see how. First, few. It is a negative adjective. It is used in the sense of not many. इसका यूज़ सेंस ऑफ नॉट मेनी के साथ किया जाता है और ये नेगेटिव एडजेक्टिव है. A few, it is an affirmative adjective. It is used in the sense of at least some. ये affirmative adjective है और ये at least some इसके साथ यूज़ किया जाता है. The few, it is used when a sentence makes two statements. One is negative and the other is affirmative. And it indicates not much but all of that number. तो the few ये जो डिटरमाइनर है उसमें सेंटेंस के टू स्टेटमेंट बनाते हैं, एक है नेगेटिव और एक अफर्मेटिव एंड इट इंडिकेट्स ये शो ऑफ करता है नॉट मच बट ऑल ऑफ दैट नंबर. ओके, इस तरह से इन तीनों में डिफरेंस है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू. सो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. ही मेक्स फ्यू मिस्टेक, ही मेक्स अ फ्यू मिस्टेक्स एंड आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड. सो हियर फर्स्ट सेंटेंस, ही मेक्स फ्यू मिस्टेक्स, ही डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक. इट मीन्स इसका मीनिंग होता है कि ही डज़ नॉट मेक एनी मिस्टेक, उसने एक भी मिस्टेक नहीं निकाली या फिर बनाई. सेकेंड, ही मेक्स अ फ्यू मिस्टेक्स, ही डज़ मेक सम मिस्टेक्स एट लीस्ट, उसने कुछ तो भी मिस्टेक्स निकाली है. एंड थर्ड, आई करेक्टेड द फ्यू मिस्टेक्स ही हैड मेड, आई डिड नॉट मेक एनी मिस्टेक्स, आई डिड नॉट मेक मेनी मिस्टेक्स एंड आई करेक्टेड ऑल ऑफ देम. मैंने एक भी मिस्टेक नहीं बनाई और मैंने ये सारे करेक्ट किए हैं. इस तरह से फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनमें कुछ डिस्टेंस है, इनमें कुछ डिफरेंस है, तो वो हमें ध्यान में रखते हुए उनका यूज़ करना चाहिए. द सेंटेंस 3 इम्प्लाइज टू स्टेटमेंट्स. ये जो थर्ड नंबर का द फ्यू यूज़ किया हुआ ये जो स्टेटमेंट है इसमें दो स्टेटमेंट रेडी होते हैं. फर्स्ट इज निगेटिव एंड सेकेंड इज अफर्मेटिव. सो निगेटिव, ही डिड नॉट मेक मेनी मिस्टेक्स, दिस इज अ निगेटिव एंड आई करेक्टेड ऑल द मिस्टेक्स ही हैड मेड, दिस इज अ अफर्मेटिव. In this way we can see the third types, the few. Here we can use the two statement within this sentence. Okay, first is negative and affirmative in this way. So let us difference in the meaning and use a little, a little and the little. Same like this, few, a few, the few. इसी तरह से यहाँ पे भी little, a little and the little में कुछ difference है तो उसको भी हम follow करते हैं, learn करते हैं. सो लेट अस सी द लिटल फर्स्ट. इट इज़ अ निगेटिव एडजेक्टिव. ये जो लिटल वर्ड है तो ये निगेटिव एडजेक्टिव है और इट इज़ यूज्ड इन सेंस ऑफ नॉट मच. ये जो नॉट मच के सेंस में यूज़ किया जाता है. अ लिटल, इट इज़ एन अफर्मेटिव एडजेक्टिव. ये अफर्मेटिव एडजेक्टिव है. इट इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ एटलीस्ट समवन. तो इसका यूज़ एटलीस्ट सम में
उसके साथ किया जाता है. The little, it is used when a sentences make two statement, one negative and the affirmative. Same like few, a few, the few. It indicates not much but all of that quantity. तो यहाँ पे सिर्फ द लिटल जो है वो क्वांटिटी का शो ऑफ करता है और यहाँ पे जो द फ्यू था वो नंबर को शो ऑफ करता था. सो लेट अस सी द इट्स एग्जांपल. ही हैड लिटल मिल्क. He had a little milk and he drank the little milk he had. So first he had little milk. Here he did not have much milk. It means it shows the not much. It used for not much sense and this is a negative sentence. And in negative sentence we use little word. Then second, he had a little milk. It means a little here we used in affirmative sentence that he had at least some milk. It means at least some milk. And he drank the little milk he had. Here we can create two statements. One is negative and one is affirmative. So let us see here. He did not have much milk and he drank all of it. So we can see here first is negative and second sentence is affirmative. In this way, in the little, it is used where two sentences are making and one is negative and one is affirmative. And here it indicates, it shows the not much but all of that quantity. Okay students, so let us change the next page and see there. In the last sentence here we create two sentence or two statements that are negative. First, he did not have much milk. This is negative. And affirmative, he drank all the milk he had. इस तरह से हमने वो द लिटल जो वर्ड है उस वर्ड में दो टाइप्स के स्टेटमेंट को रेडी किया है. फर्स्ट इज नेगेटिव एंड अफर्मेटिव. सो इन दिस वे वी यूज लिटल, अ लिटल एंड द लिटल. So let us we will solve its question and answer. Now look at here. Question number first. Fill in the blanks with few, a few or the few. यहाँ पे कुछ fill in the blanks complete करने हैं. Few, a few, the few in determiners के साथ. So first, the few remarks he made were very meaningful. I have given these all answers for you and you have to just observe these all question and answer and complete your textbook. Okay students, so I just read all the sentences with its answer. So second, look at here. A few women were wearing saris in the party. Third, a few boys are making a noise in the class. Fourth, the few clothes she had were all torn. Fifth, I am going away for a few days. Sixth, he had only a few rupees left. 7. Few people live to be 100. 8. I need a few days rest. 9. He lent me a few books. 10. He has read the few books he had. 11. I was asked to write a few poems. She has called the few things she had. You should stay here a few days longer. 14. Only a few boys were present in the meeting. It was raining and only a few boys could reach the school. Would you please say a few words in your tributes to Mr. Dharma? In this way, you have to complete first question. So let us see the second number question. Here, fill in the blanks with little, a little or the little. अभी यहाँ पे little, a little, the little in determiners के साथ ये सारे fill in the blanks complete कर रहे हैं. So let us we will read these all question with its answer. First, I want a little sugar for tea. Second, he wasted the little time he had. Third, a little knowledge is a dangerous thing. Fourth, a little money is better than nothing. Fifth, he pays little attention to his old parents. Now look at the next page. Sixth number, go and bring me a little milk. Seventh, bring me a little water to drink. 8th, she gave the beggar a little flour. 9th, he is a fool and has little sense. 10th, she lent me the little money she had. 11th, I have spent the little money you gave me. Hurry up, we have only a little time left. I have a little money and I shall help you. He is very cruel. He showed little mercy. He was late and it caused us a little anxiety. His condition is so serious that there is little hope of his recovery. In this way, you have to complete the second question and look at the third question. Here, fill in the blanks with few, a few, the few, little, a little, the little. इन सारे डिटरमाइनर्स का यूज करके ये सारा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है. So let us we will read these all questions with its correct answer here. So first,
Can I ask you a few questions? Second, she can speak a little French. Third, few people do their duty honestly. Fourth, she has little knowledge of English. Fifth, a little sugar increases a little sweetness. Sixth, I have brought a few books from the market. Seventh, can I have a little milk in my coffee, please? Eighth, he has eaten the few eggs which I had boiled. They have little money, they are very poor. She is going away for a few days next week. I have saved a little money for hard times. Some people are very lazy, they do little work. What you need is a little patience. There was little food in the fridge, it was nearly empty. The cat has drunk the little milk which was in the pot. The few people who survived in the bus accident belonged to my village. In this way, you have to complete this third question, my dear students. So you must and should look at this all question and answer, and you have to solve this all it in your books as well as notebooks. Hopes you understand, and thank you.